दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि WD250 GB का जो SSD आता है SN350 मॉडल के साथ, इस SSD में दोस्तों आपको अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो कितने टाइम के अंदर ये विंडो इंस्टॉल हो जाता है और कितनी स्पीड है इसकी ना। तो चलिए करते हैं दोस्तों पॉइंट के बाद और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर nvme SSD मेरी जो है उसे बाहर निकाल लिया है, तो इसे हम लैपटॉप में फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि विंडो इंस्टॉलेशन में टोटल कितना टाइम लगता है। तो जैसे कि मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, लैपटॉप मैंने ओपन कर चुका है और SSD को भी चलिए यहाँ पर फिट कर देते हैं nvme को। और फिट करने के बाद विंडोज़ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और टोटल टाइम आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये विंडो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हम चले गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि SSD भी जो है WD का है, कोई फेक नहीं है। तो चलिए करते हैं अब फॉर्मेट के प्रोसेस को स्टार्ट। तो यहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट होगा और अब जो है दोस्तों मैं विंडो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता होता है कि यहाँ पर विंडो आपको सेलेक्ट करना होता है, ड्राइव का पार्टीशन करना होता है। तो टोटल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कितना टाइम लगता है इस इंस्टॉल होने में। चलिए यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस है वैसा ही करते जा रहा हूँ। यहाँ पर भी सिंपली हम न्यू पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके किया, इसमें कोई वेस्ट नहीं करते, ओके करते हैं सीधा सीधा। और यहाँ पर हम दोस्तों नेक्स्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर हमारा विंडो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि टाइमर भी आपके सामने दोस्तों चल रहा है, आप देख सकते हैं, और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेट होने में कितना टाइम लगता है।
पर लगभग 9 से 10 मिनट का टाइम लगा है विंडो इंस्टॉलेशन होने में। मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बता दिया, कहीं पर भी फेक नहीं दिखाया है। और आपके सामने मैं बैक साइड में भी दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर SSD हमारा WD का ही था, मैंने चेंज नहीं किया था बीच में ना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।